ओडिशा को रिप्रेजेंट करेंगे इन मिस इंडिया कंपटीशन से आप कौन प्रिपरेशंस चलছে सब एना तो बहुत प्रिपरेशंस चलची बहुत जनकर मन रे एटा भी थाए मे बी शी इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन आउट ऑफ द स्टेट से मुंबई रे अछंती से ओडिशा को केते भल रे जान नथिबे से जहा देखिथिबे ओडिशा विषय रे दैट विल बी थ्रू हर पेरेंट्स ओनली तो से डाउट ता तम मन रे थिबो कि मे बी शी कांट डू दैट ओके हाउ यू विल बी आंसरिंग देम भले मो बोर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे रे बट मो माने जो कहती ना सो आई फील कि मो से दिन खाली मु जितलिनी मो मामा जतले जणे निज करियर बहुत यंग एज रु आरंभ करथियन एज ए मॉडल हो एज ए एक्टर हो बहुत जनकर ए कंसेप्शन ता अछि कि दे आर मिसिंग आउट ऑन देयर चाइल्डहुड व्हाट डू यू फील अबाउट दैट मोर जहाँ जर्नी रही छी आई डिड नॉट सी लाइफ ता केमिति गोटे प्राइवेसी एंड बीइंग एक्सपोज्ड टू द पब्लिक ता भीतर र बैलेंस ता केमिति if you're choosing this field you need to know one thing आपनकर रोल मॉडल की एज अ मॉडल इन प्रेजेंस parents are our first teacher and our first role models. You know, you would think a lot of people in fact asked me ki नमस्कार ओडिशा टॉक्स रो आउ गोटे एपिसोड को मु स्वागत करुछि आपन स्निग्धा आज आम सहित अछंती जणे गेस्ट लेट्स मीट हर नमस्कार आयुषी हाउ आर यू नमस्कार आई एम गुड बहुत भलो अछि तमे केमति अछ मु भलो अछि आ सब केमिति चलछि बहुत भलो चलछि आ कोन सब चलछि आफ्टर गेटिंग क्राउन्ड एज अ मिस ओडिशा केमति कोन सब चलछि क्राउन ही साला परे तो मु बहुत ही बिजी ही जाई छी सब दिन किसी शूट आमती सब अच्छी तो बहुत भल लगुच कि मत ये अपॉर्चुनिटीटा मिलता आई वांट टू यू नो फुलफिल इट टू द फुलेस्ट आम समस्ते कैमरा सामनार आयुषी पंडा को जानछु आज आम टिके फर्स्ट जीवा कैमरा पछर आयुषी पंडा विषय निश्चय बिफोर स्टार्टिंग एज अ मॉडल आपण कौन सब करथिले तो मु मॉडलिंग बहुत छोट एज रो स्टार्ट करछि मु जते बेले माने 10 इयर्स रथली 10-11 इयर्स रथली सेते बेलु मु जेहेतु मु बॉम्बे रे बोर्न एंड ब्रॉट अप तो मु बहुत इंटरेस्टेड थली सब बेले ए फील्ड रे आउ जते बेले मु 10-11 इयर्स रथली मु सेते बेलु एड शूट्स करबा स्टार्ट कली टाटा स्काई रो एड तापरे सब एमती धीरे धीरे मु एमती स्टार्ट कली इंटरेस्ट तो मोर माने छुआ बेलू ही थिला जिते 9-10 है से टिके पाठ आसीगला तो मुझे पाठ रे कॉन्सेंट्रेट कली तापरे कॉलेज आसी सारला परे जिते मिस ओडिशा रो फॉर्म गुड़ा बाहरला तो मु आउ थरे आई जस्ट गिव इट अनदर शॉट एंड बाय गॉड्स विल आई वन एंड जस्ट मेड मी सो हैप्पी जिते आप स्टार्ट कले आप कहले कि आप बोर्न एंड ब्रॉट आउट इन मुंबई तो आपण ओडिशा बैक के पे असले एक्चुअली मो फैमिली ना भी मुंबई रे ही रहू हमें बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई बट माने समस्ते ओडिया घरे ओडिया रे ही कथा हो मो ओडिया भी बहुत भल कि स्पष्ट बुझी भी पारे कहि भी पारे तो मो मामा पापा दुई जन ओडिशा रो ही भुवनेश्वर में आ से ही मते बहुत सपोर्ट करचंती आ माने पुश करचंती मिस ओडिशा पे से मु आज ये ओके आउ हमको बतातु गोटे मॉडल लाइफ रे कौन सब स्ट्रगल्स और चैलेंजेस आसे एज ए स्टार्टिंग आउट जतले आपन कहबे व्हेन आई स्टार्टेड आउट एज आई सेड आई स्टार्टेड आउट फ्रॉम अ वेरी यंग एज तो छोट बेलू मु स्टार्ट आउट करथली जे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कंपटीशन थाए मॉडलिंग वर्ल्ड रे बहुत कंपटीशन थाए आ बहुत क्राइटेरियाज थाए जो तुमको फुलफिल करबा को पड़े आ टाइमिंग्स वर्क टाइमिंग्स मॉडल्स मान को बहुत माने इनडिसाइसिव थाए माने जदि हम शूट चालू होची 9टा बेले सकाळ 9टा रे तो राती 9टा रे सरे केबे केबे सेटा 9टा रु राती 12टा हे जे गोटे 2टा बज जाए ठीक है तो मेन स्ट्रगल्स मॉडल्स रो होची कि माने टाइमिंग्स तापरे
सिलेक्ट हवा कभी एते कंपटीशन थाए एते समस्ते एते सुंदर सब जिते मॉडल्स आसती किसी भी ऑडिशन देवाई तो एगुड़ा हूँ मेन स्ट्रगल मैंने जोगुड़ा मु स्टार्टिंग आउट एस्पेशली एज अ यू कैन से चाइल्ड मॉडल जहाँ मु फेस करछि कि बहुत क्राइटेरियाज बहुत प्रोसेस थाए ठीक अच्छे किसी भी देर इज नथिंग हाउ शुड आई से क्विक यू नो क्विक कि तुम आज ऑडिशन दिल राति नेक्स्ट दिन तुमको कॉल आसीगला कि तुम सिलेक्ट हो जाइछ यू टू गिव मल्टीपल ऑडिशंस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन जोटा गोटे हूँ बहुत इंपोर्टेंट जिनस ए फील्ड रे इज कि बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग कीप गिविंग ऑडिशंस यू विल गेट सिलेक्टेड इफ यू नो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ माने तुम तुम काम कर you know you're working hard so you should keep giving auditions keep trying this is the most important thing that I learned in this field तो फॉर एस्पायरिंग मॉडल कौन कौन क्वालिटीज रहिबा बहुत जरूरी in India especially if you're an aspiring model though इन आजिकल तुम देखी पार्छ कि मॉडलिंग इंडस्ट्री बहुत इंक्लूसिव हो जाइए हाइट को लेकिन कलर को लेकिन वेट को लेकिन सब जिन को लेकिन बट स्टिल देर आर सम बेसिक क्राइटेरियाज डिपेंड्स कि आप रनवे मॉडल बनवाक चाहते कि कमर्शियल मॉडल इफ यू वांट टू बी अ कमर्शियल मॉडल ताहले क्राइटेरियाज आर मोर लेस स्ट्रिक्ट आई वुड से they just want a very pretty face, someone who's confident, someone who's comfortable on the camera and comfortable with themselves. कंसीडरिंग कि आप जदि रनवे मॉडल बनवाक चाहते तो गोटे मेजर क्राइटेरिया हूँ हाइट फॉर गर्ल्स इन इंडिया एज फार एज आई नो यू कैन से 5'7" एंड अबव सो दैट इज वन क्राइटेरिया ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର शेड्यूल एते टाइट रोची दिन राति जाके आपण पूरा डेडिकेटेडली काम करछन सेतोक आपनकर स्टडीज ऊपर केंती आपण फोकस करंती वेरी गुड क्वेश्चन मु इना थर्ड ईयर रे अछि मु बीटेक कंप्यूटर साइंस करछि केटी यूनिवर्सिटी रो तो केबे केबे एमती भी दिन थाए जो दिन मो शूट थाए हम क्लासेस भी सेम डे ही थाए टाइमिंग्स भी क्लैश कर जाए एंड आई हैव टू चूज तो जदि किसी इम्पोर्टेंट टेस्ट न थाए तो आई हैव टू मेल माई टीचर्स एंड इन्फॉर्म देम बिफोर हैंड दैट आई विल बी गोइंग फॉर दिस शूट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर टुडे देख सबू लाइफ रे सबुठू इम्पोर्टेंट जिनस हूँ बैलेंस आटा अचीव करवाटा बहुत हार्ड बट वी कैन ओनली ट्राई आवर बेस्ट तो मु तो इना अपन तो ट्राई ही करछि माय बेस्ट एंड बाय द लव ऑफ गॉड बहुत भल कि बैलेंस हो आई एम एबल टू एंड माय कॉलेज इटसेल्फ माय प्रोफेसर्स माय टीचर्स दे वेरी सपोर्टिव तो जदि मोर किसी गोटे दुटा जिनस मिस भी हो जाए से मते रीटेस्ट रीअपियर करने को दियंती जमती एज यू सेड इट्स अ वेरी बिजी स्केड्यूल वेरी टाइट सब बड़े मैनेज हो पारे बट पीपल अराउंड यू like my college, my teachers, my professors, my friends, my classmates, they help me manage all this. Because of them, I'm able to achieve that balance. मैंने जब भी किसी नोट्स मिस हो जाए या फिर मुझे किसी बुझी पारे मो जे सांग जे मो क्लासमेट से आसिक मत बुझे देव तो सेटार सब बैलेंस हो जाए जिते आपंकर कॉलेज रे जानिले आपण क्राउन होइछंती मिस ओडिशा बोली सबुठु फर्स्ट रिएक्शन आपंकर फ्रेंड्स कर कोन था मोर रूममेट्स जी जेहेतु हॉस्टेल रोचे मो रूममेट्स जी से तो पूरा कांदी पकेले बहुत खुशी हेले व्हेन वी अचीव समथिंग आमको सेतकी रियलाइज हुए कि आम मैंने एट दैट मोमेंट कि आम कौन अचीव करछु बट पीपल अराउंड अस व्हेन यू सी देम मोर हैप्पी देन यू आई थिंक नो फीलिंग बीट्स दैट इट्स अ वेरी गुड फीलिंग seeing people around you be happier than you for your own success. So all of my friends जितने भी मो सांग माने थिले मो सांग मानकर मामा पापा ठीक अछि समस्ते तांको नेबर्स को जाकी कहउछंती या फिर तांको कलीग्स को जाकी कहउछंती आम झियर सांग मिस ओडिशा हैला तो से जिनसटा बहुत भल लगे एंड आई वाज माने पूरा ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पांस जेतबे मो क्राउन जीती की कॉलेज गली वापस तो आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पांस एंड इट
it truly makes you so grateful for life overall. ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଇନ୍ କମିଂ ଡେଜ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ଇନ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ ଚାଲିଛି ସବୁ? एना तो बहुत प्रिपरेशन्स चलची वॉक प्रिपरेशन डाइटिंग एक्सरसाइज तापरे स्पीच ऑल्सो गोटे जिनस लोक मैंने भावती पैजेंट्री इज ओनली अबाउट लुकिंग गुड वेल दैट इज वेरी सरफेस लेवल पैजेंट्री especially Miss India and Miss World, it works for a cause. And it's not just pretty faces, it's beautiful minds and beautiful hearts. So you just don't need to be a pretty face, you need to be kind, you need to be smart enough. You should know about the world issues. What is your country facing? What the world is facing overall? Especially, issues related to women, children, education, crime against women. So if you're not educated upon those topics, then, because you'll see in pageants, जितबले आमे pageants माने आपण मन देखिबे जितबले आमे किछि pageants रो क्वेश्चन आंसर राउंड देखो तो आपण देखि सब टॉपिक गुडा जो क्वेश्चन पचरा होय बहुत थॉट प्रोवोकिंग थाए दैट्स द रीजन दे चेक योर इंटेलेक्ट से मैं देखंती कि आपण केमती माने केमती आपण भाबंती तो सेटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रिपरेशन तापरे रीडिंग बुक्स तो आई लव रीडिंग तो दैट्स लाइक अ चेरी ऑन टॉप फॉर मी तो एगुड़ा सब चलची मो प्रिपरेशन रे आउ बस भल कि देवी माई माने मोर एम होची कि मु ओडिसा को जिते भल कि रिप्रेजेंट करि पारे मु सेते भल कि रिप्रेजेंट करे कम कि ओडिसा इज अ हिडन जेम माने lot of people they underestimate our state, but it has so much to offer and I am getting a chance to represent my state and I am very proud and I'll give my best. बहुत जनकर मनरे एटा भी थाए कि मे बी शी इज बोर्न एंड बॉट अप इन आउट ऑफ द स्टेट ओके तो से मुंबई रे अछंती से ओडिसा केते भलरे जान नथिबे से जहा देखिथिबे ओडिसा विषय that will be through her parents only. तो सेही विषय रे जेतळे जो माने आपनकर फेलो कॉन्टेस्टेंट्स थिले से माने भी फील करथिबे कि लाइक नो मु एठी बॉर्न एंड बॉट अप अछि मो ओडिसा को जते भलरे जानछि तार संस्कृति को जंती मु शो करि परिबी से डाउट ता मनरे थिबो कि मे बी शी कांट डू दैट Okay. हाउ यू विल बी आंसरिंग देम? Okay, so very fair question. तो देखो खाली ओडिसा रे माने रही की बड़ हबाटा डजंट मीन कि यू कैन रिप्रेजेंट अ स्टेट बेटर ठीक अच्छे भले मो बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे रे बट मो माने जो कहती ना यू आर ओडिया बाय हार्ट तो मुझे आमे जमती लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो देयर मदर टंग्स a lot of people who are living outside the country or even outside the state so they don't know their mother tongues. I know myself जेतो बॉम्बे रे रहउतिली तो मोर केतेटा ओडिया सांगो थिले ठीक अछि but they didn't know how to speak. In fact I was the one of them who was able to speak Odia. This does not apply for all but a lot people who are living out of the state ठीक अछि तापरे मोर एठी सबू रिलेटिव्स मोर एठी तो जेतबे भी समर छुट्टी हुए मु सब बड़े आसे पूरा खेले मु गाँ को जाए तो मु बहुत कनेक्टेड और तापरे मु एना 3 वर्ष पढ़ुची भी ओडिसा रे रोची 3 वर्ष हेलानी तो आई एम वेरी कनेक्टेड टू माय रूट्स आई एम वेरी रूटेड इन माय कल्चर तो दैट विल बी माय आंसर टू एनीवन हु आस्क्स मी सच अ क्वेश्चन. And I think there is no one who can represent my state better than me. That's a beautiful answer. So let's move on to the on-screen person you are. तो जेतळे आपण फर्स्ट टाइम स्टेज ऊपर ठिया हेतले ओके फर्स्ट एक्सपीरियंस आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन दिस वन I'm speaking on the very first one when you actually started out as as a model or as a performer or as a performer तो you started out very early but I want to know मु जाने चाहूँ कि अपन
फर्स्ट As a टाइम model. मॉडल ओके ओके स्टार्ट करते तो जेहेतु ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ତ आई रिमेंबर आई वाज अराउंड 11 सो देयर इज समथिंग कॉल्ड जैसे हमारा टाइम्स फैशन वीक होता है सेमती हमर हुए इंडियन किड्स फैशन वीक तो सेटा मु पार्ट नहीं थी आउ से सीक्वेंस रे जेहेतु मु बहुत लंबा थी मु लास्ट रे थी तो जमती जे भी लास्ट रे हुए से ताको शो स्टॉपर कहती राइट तो it was not planned but I automatically became the showstopper for my very first show तो ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାମା ବାପା ଆସିଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ବି ଅଛି ସେ ବି ଆସିଥିଲା ମୋତେ ଚିୟର୍ କରି ତ ଯେତେବେଳେ stepped onto the stage I felt you'd think I'd feel nervous as a child but I felt very confident and I think I felt my very best on the stage walking that ramp and I felt very happy and that's when I knew ki this is for me this is something I really love doing mane as far as my memory goes back to that was how do you say mane gote life turning moment gote थाए ना तो डेफिनेटली सेटा गोटे लाइफ टर्निंग मोमेंट थिला मते बहुत भल लागला स्टेज ऊपर जाय कि बहुत कॉन्फिडेंट फील हला आउ मते लागला कि आई शुड परस्यू दिस तमे कहि परिया सेटा वाज द मोमेंट जेतळे आपण रियलाइज करले कि नो आई बिलोंग हियर आई वांट टू डू दिस फॉर माय फ्यूचर या यू कैन से दैट आपण एटा कहि परबे कि से मोमेंटटा मोर गोटे थाए ना गोटे टिक मोमेंट तो सेटा मोर थिला कि ओके आई वांट टू डू दिस इज फाइन दिस इज फॉर मी हाँ आपन को पेरेंट्स को रिएक्शन केंदी थिला जेतळे आपण माने विन करले एक राउंड एक्चुअली जितेबाला मिस ओडिशा कॉन्टेस्ट थिला सेतेबाला माय पेरेंट्स वर सपोज टू कम फॉर द कॉन्टेस्ट बट मु तांको मना कर देली कि कम पे बॉम्बे रु एते दूर एक्चुअली उस टाइम पे मो सिस्टर रो एग्जाम्स भी चलते तो मु कहली बॉम्बे रु एते दूर आसीबो गोटे दिन रो कंपटीशन पे तो मु तांको मना कर देइतिली कि ना ना तमे आसनी गोटे दिन रे तो कम पे कि भले माने सी कंपटीशन टा इट वेंट ऑन फॉर 20 days with sub contests in between but the finale was of one day gote ratira katha gote decision one winner one day one crown तो मु कहली नहीं नहीं तमे आसनी कौन हम आसी कि छाड़ो छाड़ो आसनी तमे बेकाटरे माय लिटिल सिस्टर कॉल हर बाबू कही बाबू रो एग्जाम अच्छे तमे आसनी मामा पापा तमे रुह माय आई वाज विथ मी माय ग्रैंडमदर ऐसा एक आई कॉल हर माँ तो ऐसा एक नहीं नहीं माँ तो आसचंती तो मैंने आसनी जहाँ अब देखा जीव तो मो मामा सेते कॉल रे कहिथिले तू जीति गलु आमे माने रहिबुनी तो मते बहुत खराब लागिबो मो कहनी अच्छा ठीक माने सेही टाइम रे टिके थाए ना तुम टिके नर्वस थाओ यू डोंट वांट टू थिंक अ लॉट अबाउट winning losing this that you want to focus you want to put all your focus in performing तो मु कहली कि हाँ हाँ ठीक अच्छे आमे देखिबा तापर ऑन द डे आफ्टर आई वन सो फर्स्ट तो मैंने पूरा बैक स्टेज आई गॉट स्वॉर्म्ड अप तो मामा को कॉल कर वी डू नॉट हैव आवर फोन्स विथ अस सो सेतेबेले तो मिललानी बट जमती ही मु माने आई गॉट टाइम लाइक आई गॉट फ्री अ लिटिल आई ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल माय मॉम and she was all in tears. My sister was in tears, my papa was in tears. They are the happiest because it's because of them that I'm here. And if they had not supported me to pursue this field, then from a very young age, in fact they were the ones who were like, you go here, you give this audition, you give that audition. So because of, so I feel ki मो से दिन खाली मु जीतिलिनी मो मामा भी जीतिले मो भौणी भी जीतिला पापा भी जीतिले तो it was like their efforts paid off yeah it was like their efforts paid off आगु को अपन का प्लानिंग्स कोन कोन छी आगु को तो इना मिस इंडिया आसीबो तो सेटा पे ऑलरेडी चल जी आफ्टर मिस इंडिया आई विश टू डू मोर शूट्स music videos. I would also like to explore acting. more interest अच्छी टिके acting towards जमती कि मु कहली कि मैंने मु ads रे भी काम करछि गोटे गोटे short film भी करछि तो if I get a chance then I'm very much excited to try all that out.
अन्य मान को भली आपनकर भी से ड्रीम अछि कि जस्ट लाइक अदर्स कि वंस आपण गोटे आइडेंटिटी गेन करदेबे थ्रू दिस पैजेंट्स आपण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आड़ को लीन करछन्ते जिबा पे Yes, absolutely. I love art, and I love all types of art. Art includes your dancing, acting. So I've always been attracted towards it. तो जदि मते एमती किसी ऑफर मिलला तो मु तो हैप्पीली माने इफ इट्स अ गुड ऑफर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन इट आई एम वेरी मच फॉर इट एंड जस्ट let's see where life takes you, you know. आपण जंती मेंशन कले कि you love reading. What kind of genre do you prefer reading? Actually, it'll be very funny. A lot of people read, fantasy. A lot of people read crime-related stuff. I actually really like self-help books. From a very young age, I really like reading self-help books because I know those books are a little boring and most children don't like to read them, but I've always read self-help books, and the most books in my if you see my small collection, then the most books I've read are self-help books only. What's your favorite one that you read? Oh, there are so many. But if you say a recent one that I really liked is 2 books, I would say. One is Ikigai. Okay, very famous, very popular. I had not read it from I had seen माने मु देखिथिली कि ए बुकटा विषय कथा होचंती बट मते टाइम मिल नथिला पढिबाकू मो पापा भी गोटे एविड रीडर तो because of him, because he has a huge collection of books, so because of him I am also very keen to read and learn. So I picked up that book, and it's a very simple book. It's filled with simplicity, and it just tells you how to live a better life, a healthy life, through examples of Japanese people. And बहुत छोटे छोटे कथा इला से बुक रे जेमती गोटे कथा कहूँ मु कि मैंने जमी था ना टू लीड अ हेल्दी लाइफ यू डोंट नीड टू मेक सम मेजर चेंज इन योर लाइफ यू नीड टू मेक जस्ट स्मॉल लिटिल चेंजेस एंड दैट विल एड अप तो गोटे माने टिप थिला से बुक रे कि जमती आम जो खाना खाऊ तो वी ईट टिल वी आर फुल माने जब आमको लगे कि हाँ आउ खाई पारिबुनी से आम खानाटा बंद करो बट द टिप इन द बुक इज कि जो आप खाना खाऊँच ईट टिल यू आर 80% full and then stop eating. And the reason why I like self-help books is the small tips and tricks in those books. I love applying them in my real life and see if they actually work or if they're just written. So I applied that in my life, and honestly it's a game changer. Sita jodi mane apan bhi apply karibe, it really changes the way everything works. I felt more better and energetic. aman karo audience man ko any kind of self help book ଆପଣ recommend କରିବେ तो को self help book टा ଆପଣ recommend କରିବେ? There's this book that I really like. It's the name of the book is very interesting. It's The Courage to be Disliked. Okay, yeah, that's the reason why I bought it, because I read the cover and I was like, it's not your normal book. Like how you expect self-help books to be, ki how to be successful, how to manage your finances and all. But this book was a little different. Its heading itself was different. The Courage to be Disliked. So I immediately bought that book because I'm so curious. तो जिते पढ़ा स्टार्ट कली से बुकटा को से बुक रे बहुत बहुत भल भल कथा गुड़ा लिखाई वेरी ट्रुथफुल बुक. इट्स अ बुक दैट विल शो यू मिरर टू द रियलिटी. तो जदि मु ऑडियंस मन को भी बुक सजेस्ट करबी सेटा हबो द करेज टू बी डिसलाइक्ड. काई मोस्टली सेल्फ हेल्प बुक कड़ा को बहुत मोटिवेटिंग थाए आवर नेम्स रे एटा हाँ आई हैव सीन अ फ्यू जो थे वेरी यूनिक नेम्स थाए but this sounds intriguing. It is, and the content of the book itself is even more intriguing. And as you read, if you I really suggest you that you read it. It's very nice book. It will teach you a lot of lessons in life. जैसे एक चीज़ बोलते हैं ना कि
जो स्मार्ट होता है वो अपनी गलतियों से सीखता है, बट जो वाइज होता है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो सेटा ही कथा कि से बुक रे सेमती यू नो द स्टोरी लाइन इज सेमती। तो सेटा बहुत भलो बुक, मु डेफिनेटली रेकमेंड करबी आपन को पढ़िबा पे। As a model, when you started out, तो first and foremost आपन को जेतळे दिया जाइथो डाइट प्लान्स एंड एवरीथिंग, ओके, तो most of us are not quite conditioned to that कि अमन को इच्छा है हम एटा खाइबो, cravings control हुएनी, ओके। starting out as a model ई सब जिनस तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा restriction food रे पड़े आस्थिबो। True. How did you cope up with that? Okay, ଜାଣିଛ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମିଠା ଛାଡ଼ି ପାରିବେ କେବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମାଇ ମେଜର ଥିଙ୍ଗ when I started out dieting and all, and even now because I'm still on diet and you know junk ମୁଁ ସେତେ ଖାଏ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଘର ଖାନା ହିଁ ଖାଏ, ନର୍ମାଲ ଭାତ ଡାଲି। ବଟ୍ ମିଠା ମୋର ରସଗୋଲା, ଛେନାପୋଡ଼, ଗଜା, ଖଜା, तो ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଟୁ ଲିଭ୍ ସ୍ୱିଟ୍ସ। ଏଇନା ବି ଆଇ ଏମ୍ ଅନ୍ ଅ ଜର୍ନି ଟୁ, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଇଛି ସ୍ୱିଟ୍ସ ଖାଇବା, ବଟ୍ କେବେ ମନ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଟିକେ। बट अदरवाइज कोपिंग अप विद द डाइट, देखो कोई भी डाइट माने व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग विद द डाइट इट इज़ माने very difficult to start with diet. It's about your we mostly think कि माने physical, but it's more like mental. You know, when you start off dieting, माने कहीं भी जेतବେଳେ डाइटिंग स्टार्ट करती फर्स्ट 2-3 दिन तो भल कि चले, तुमको लगी हाँ, बट जमती यू हिट दैट 10-day मार्क तुमको लगी बहुत चिड़चिड़ा फील हुए कि अरे यार मो मनपसंद खाना खाई पारुनी, ठीक अच्छे मो सांग मैंने सब स्पेशली एट दिस एज, ठीक अच्छे समस्ते तुम आजु बाजू सब पिज्जा पास्ता खाऊँगी आ तुम से बस सैलेड खाऊच, एग्स खाऊच, किनोआ खाऊच, तो सेटा टिके लागे। बट you know once you get a hang of things then that food starts suiting you. तापरे ना ऑटोमेटिकली तुमको बर्गर खाइबा को इच्छा हुए नहीं, पिज्जा खाइबा को इच्छा नहीं। देखो क्रेविंग्स तो समस्त को हुए, मते भी हुए क्रेविंग्स। आई हैव अ वेरी बिग स्वीट टूथ, बट I try like my level best to control my cravings, working on that, still working on that to reach the ultimate full diet. यदि आपण मेंशन कले यू आर ए स्वीट टूथ एज वेल, तो जेतळे आपण ओडिसा को आसंती cause you'll find all the sweets you want. Odisha is known for its sweets. Basically you would have like a plate full of sweets and फिर भी गोटे स्वीट रिपीट होवनी। That's variety. Exactly. किंतु आउट ऑफ ओडिशा मु देखी जे बहुत जगह रे एते स्वीट्स नाही, ओके। तो जेतळे आपण मूव करंती बैक टू होम, तो हाउ मच डू यू मिस दोस स्वीट्स? I miss them a lot, not just me, my family also। कभी सेठी बॉम्बे देखो माने ओडिसा रो छेनापोड़ तो ओडिसा रो छेनापोड़, बॉम्बे रे जत्ते भी छेनापोड़ मिलू सी सेम टेस्ट तो आसते नहीं। तो मैंने एज आई सेड मु गर्मी छुट्टी रे सब बड़े एठी आसु, तो मैं जत्ते बड़े भी आसु माने इयरली हमें वंस या ट्वाइस आसीबो, जत्ते भी आसु जेतोड़ा जाओ वापस पूरा 2 bags गजा, छेनापोड़, ए मिठा से मिठा सब मिठा धरिकी आसु। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम बैक इन मुंबई। माने ओडिया मिठा तो तुमको ओडिशा रे ही मिलिबो, आउ माने से टेस्ट इज अनबीटेबल। ओडिशा क्विजीन ही माने एते वैरायटी और एते टेस्टी कि ताको रेप्लिकेट करिबाटा अनलेस एंड अंटिल कहीं ओडिशा रो ही आसिकी बॉम्बे रे बेस है कि सेमती किसी स्टोर खोलंदो, इट्स वेरी हार्ड टू रेप्लिकेट इट द एसेंस। तो जेतळे बैग फुल करी करी आपण नहीं कि जानती, तो बेसिकली इन योर रीच, ओके, सामना पर थुआई छी, इट्स लाइक अ फॉरबिडन फ्रूट। या हाउ डू यू फील? it's you must be knowing it's very tough. मु बहुत इच्छा हेले लंच परे टिके खाई दिए, नले I try to control my level best to not eat. The thing is ना आपण सिंगल चाइल्ड थे
different, okay? Hmm. But when you have a sibling, they are like They're very devil in naughty. disguise. Yeah, Devil absolutely. in disguise. Especially younger siblings are absolutely a devil in disguise only. So yeah, my sister, she's very naughty. If she knows I'm on diet, okay, and even when as I'm saying, I'm living in hostel, so if mama makes some really tasty food at home, so she'll purposely video call me and she'll tell me like mo ghara na mane, she'll call me and she'll tell me, see, I'm didi, see, I'm eating this, and she'll like record, send me pictures, and she'll take a video of her eating that, and I'll just be so mad because घर का खाना is something different at the end of the day. So I'll tell mama, why is she doing all this, and she'll be laughing in the background. She's very naughty. फोटो उठे दे कि ना दीदी खाई दी तू पठे देवी तो पार्सल पठे देवी समझी बहुत बदमाश. But the sibling bonds are really like that. That's how sibling bonds should be. Let's move on to life as a model as well. कि फ्यूचर रे जदि आपण मॉडलिंग छाड़ी के आउ किछि करियर चूज करि परिबे, व्हाट प्रोफेशन इट वुड बी? Okay, that's a great question. तो जेमती मॉडलिंगटा केमती कि एटा बहुत लुक्रेटिव करियर नुह. लुक्रेटिव मीनिंग कि माने मु मॉडलिंग गोटे एज तक करि परिबी, ठीक है, माने 26 27 तापरे आई नीड टू मूव ऑन इन लाइफ एंड तापरे मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज भी एज यू ग्रो ओल्ड मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज भी कम ही जाए. दिस इज पीक टाइम, द एज आई एम इन, दिस इज द पीक टाइम कि तुम मॉडलिंग करिबो एगुड़ा करिबो. बट आफ्टर दैट पीक टाइम इज ओवर. इट इज वेरी हार्ड टू कंटिन्यू as a model and get that many projects and all of that. तो खाली मॉडलिंग उपरे डिपेंडेंट रहिबाटा मु भाबे कि गोटे माने बेस्ट ऑप्शन नुहे. ठीक अछि. You should always be educated. Yeah, education is a must. You should have a degree. ठीक अछि. After you complete a certain level of education, then only you have the choice कि मु एटा फुल टाइम करिबी मॉडलिंग टा कि मु आउ को करियर फील्ड रे जिबी. तो मु एना मो डिग्री कंप्लीट करिबो आउ मोर गोटे वर्ष बाकी अछि. बट जदि इफ आई फील in this modeling ki this is only good for part time and some time only, and this is not good for me for full time, then I will switch to consulting. I'm very interested in consulting. Business analyst, that's the role that I'm working on side by side. As I said, I'm studying BTech in computer science, so that's the role I'm working on for consulting and tech consultant, something like that. So seta bhi side by side chalshi. We'll see where life takes you. You never know what works out and what does not. What if you end up doing something very good in the modeling field, or maybe sometime after some years the modeling field does not work out, so I have something to fall back to, so that is why it is very important कि तमे side by side किसी business या फिर किसी भी तमे माने modeling करो, but side by side तमरो किसी ना किसी रहिबा दरकार. एक क्वेश्चन था बहुत जनक देहरे अछि. आई वांट टू आस्क कि जेतळे जणे निज करियर बहुत यंग एज रु आरंभ करथियंती, ओके, एज ए मॉडल हो, एज ए एक्टर हो, तो बहुत जनकर ए कंसेप्शन ता अछि कि दे आर मिसिंग आउट ऑन देयर चाइल्डहुड. व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? आपन को मत कोन से विषय? बहुत स्वीट क्वेश्चन कहबी. बट माने मोर जहा जर्नी रही छी, I did not miss on my childhood. In fact, I enjoyed it even more. Doing something, what separates ordinary from extraordinary. It's that, little extra. तो सेतेबेले से जो मु एक्स्ट्रा काम करूथिली and when you're a child, you're always excited to do, new things, fun things. तो बाकी समस्ते स्कूल जानती, मु भी स्कूल जाए, मु सब दिन स्कूल जाऊली. बट केबे केबे जदि मोर किछि शूट थाए तो मु से दिन स्कूल नहीं जाए. आउ ओबियसली स्कूल रे तो पाठ मैनेज हो जाता. आउ नेक्स्ट दिन जेतरे मु स्कूल जाए मते समस्ते पचानती कि आयुषी तमे कम पे आसनथिलो. तो मु कहबी ओ बिकॉज मु काम करथिली, मु शूट थिला.
So everyone is very intrigued, and as a child it makes you feel very happy when everybody is asking you questions. And mane say time re mane say age re, everyone is so happy for you and excited and wants to get to know ki tame kaun karo exactly. So curious minds, no, little curious minds. तो सेया ही कि ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ରେ ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ମିସ୍ ଆଉଟ୍ କରିନି. ଆଇ ଡିଡ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲିଂ ଅଲସୋ ଫୁଲ୍ଲି. ମୁଁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ମିସ୍ କରୁଥିଲି, କି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା. ମୁଁ ଖାଲି ଯେଉଁଦିନ ସୁଟ୍ସ ଥାଏ ସେତେ ସୁଟ୍ସ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା. ମାନେ ତମେ ଭାବିନିଅ କି ଇୟର୍ରେ ମୁଁ ମାନେ 5-6 ଟାଇମ୍ସ ସୁଟ୍ସ କରୁଛି କିଛି ନା କିଛି. ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ପାଇଁ ହେଇଗଲା, ସେମିତି କିଛି. तो ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ. It's a extra curriculum, you know. And I think because of starting out early, it made me quite mature. I got, you know, exposure from a very young age. So I feel you would think that it killed my childhood. A lot of people might assume ki, oh, maybe she did not get time to, you know, be with friends and all of that. She was busy with shoots only. But that's far from the truth. ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ. ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ମୋ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍. ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଟା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାରିକୁଲର୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା, ମଡ଼େଲିଂ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି. being surrounded with cameras all along, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ରୁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ବି ଏନି ପ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଗୋ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏବେ ଏଇଠୁ ବାହାର ଯିବେ, କେଉଁଠି ବି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି. ତ ସେଇ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି ଆଣ୍ଡ ବିଇଂ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଟୁ ଦ ପବ୍ଲିକ୍, ତା ଭିତରର ବାଲାନ୍ସଟା କେମିତି ଆସେ? ସେଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍. ମୁଁ ଭାବେ କି ମାନେ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଚୁଜିଂ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ଡ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ନୋ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍. ଗୋଟେ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର କି ପ୍ରାଇଭେସି ୟୁ ନିଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ योर ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି. कि तुम मीडिया को केते अलाउ कर तुम लाइफ रे इंटरफियर करने को. तो यू राइट, आई बीन सराउंडेड बाय कैमराज मैंने बचपन रू ही. बट मोर प्राइवेट लाइफ आ मो पब्लिक लाइफ बहुत ही अलग. मैंने मुझे बहुत सेपरेटली रखे. आउ प्राइवेट लाइफ शुड बी प्राइवेट लाइफ. यू डोंट नीड टू शेयर योर प्राइवेट लाइफ टू द पब्लिक, आउ whether it be on social media or anything, because social media is you know, जितने ही उनके प्रोज हैं उतने ही उनके कॉन्स हैं. तो आई डोंट you know, truly believe in sharing a lot of private information or, you know, photos, videos or anything, you know, related to my private life on social media. And coming to the balance that कि तमें कहबो कि public माने गोटे था ना public image और गोटे private, everyone is different, you know. There is you know one माने one कौन कहबी कि one personality of you is for the public, for the people around you, okay, and one is for your friends, for your family, and that should be the case. That does not mean that you're two-faced or something like that. It only means that you know, you have different versions, one for the world and one for the, you know, your close ones and your relatives and your friends and your family. ମୁଁ ସେଇଟାରେ ବିଲିଭ୍ କରେ. ଯେମିତି ଆପଣ ଡ୍ରିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବେ ବୋଲି, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୱାନ୍ସ ୟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବନି କି ଆପଣ କେତେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍. So how do you plan on managing that? Yeah, you're right. एना तो सेते publicity नहीं, तो that's why I'm able to manage. But जेतेबड़े, you know, touch wood, if you know, I get very viral and popular, then I will be bombarded with cameras and I won't have that control. You're right. सेतेबड़े see, you need to try your level best to, you know, see, when you become a known personality, a public figure, so you will be bombarded. That is you know, it goes hand in hand. Okay, the media wants you, they will get, कैसे मिलेगा उन्हें न्यूज़, आपसे ही मिलेगा, ठीक है. A lot of actors call the paparazzi themselves for their own PR. You'll see a lot of actors and actresses call paparazzi. Some don't.
So I feel I will be in that segment that if I'm going to some event and I'm getting bombarded, then that is a different thing. That is to mane kon kahbi mane it's obvious, okay. But unless in that, if I'm having a dinner with my family or something like that, I would try to stay low key and just have good time with my family, because I feel when you're a public figure, you don't really have a private life. Actually becomes a concept, when we see these actresses and actors, private life really becomes a concept. But you need to try to make it as, you need to try your best to make it as private as you can, and jaha habo dekhajibo. ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ମଡେଲ ଭଳିଆ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ନର୍ମାଲ ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ କନସିୟସ୍ ନିଜ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜର ଲୁକ୍ସ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିପ୍ସ କ'ଣ ରହିବ? ସ୍କିନ୍ କେୟାର, ନିଜ ଗ୍ରେସଫୁଲ ଅରାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ? ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା। କମିଂ ଟୁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର, ଆଗ कि सब मॉडल्स मान को बहुत भल कि सब मेंटेन करने को पड़े, मैं ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू मेंटेन एवरीथिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने समस्ते ह्यूमन ही, ठीक है जी, समस्त को पिंपल्स हुए, मॉडल्स मान को भी पिंपल्स हुए, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स हुए, बट मन को टिके आउ एफर्ट्स पकेवा को पड़े टू, बिकॉज वी आर ऑलवेज फेसिंग द कैमरा, तो वी नीड टू हैव अ थोड़ा सा अपडेटेड स्किन केयर रूटीन, टिके मैंने टिके नॉर्मल मैंने ऑडियंस टू टिके हाई फाई टिके स्किन केयर रूटीन टू मैनेज आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज आम लाइफस्टाइल ही सेमती कि आम सब बड़े मेकअप होची, हेयर स्प्रे, वैक्स, इतने सबू, तो वी नीड टू टेक केयर इन सच अ वे कि मैंने सब मेंटेन रहू, झड़ी ना जो सब चुट्टी आउ मैंने स्किन खराब, कभी व्हेन यू पुट अ लॉट ऑफ मेकअप तो स्किन मैंने पूरा खराब हो जाए, कित पिंपल्स आसे। तो मोर स्किन केयर रूटीन मु कही दूसरी 10% मन को कि मोर बहुत ही सिंपल। फर्स्ट जिनस हो मैंने आई थिंक पैजेंट्स सबुठू मैंने सबुठू बेसी फॉलो करती टीनेज गर्ल्स ना, तो मुझे जो मु टीनेज थी मु तो बचपन रू ही फॉलो कर, तो आम जो इन जमती सोशल मीडिया इन बहुत एक्टिव, तो आम देखू कि ए स्किन केयर भी यूज होटा भी यूज होटा भी यूज हो, तो आम भावु कि आम सब यूज करदेबू तो आम पूरा बहुत भल देखा, बट दैट्स नॉट द केस। सेटा यूज करवा माने यू शुड ओनली यूज दैट which suits your skin type, कभी समस्त स्किन टाइप बहुत डिफरेंट, आउ जिते कम प्रोडक्ट्स तुम यूज कर बट गुड प्रोडक्ट्स दैट इज इफेक्टिव। तो मोर बहुत सिंपल स्किन केयर रूटीन कि मु मुँह धुए, ठीक अच्छे, बहुत जेंटल क्लेंजर हो, सेटाफिल क्लेंजर, तापरे मुँह जदि मु मेकअप लगे थी तो आई विल यूज अ क्लेंजिंग बाम, तो मुझे क्लीन करे, तापरे मु क्लेंजर धोए, तापरे मु मॉइस्चराइज करे, मॉइस्चराइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक अच्छे, तापरे मु किछ नहीं टोन करे, ठीक है, मॉइस्चराइज करे, ठीक है, लिप बाम लगाए, सही पड़े। और जदि किसी मैंने इफ पीपल लाइक आई डोंट डील विथ अ लॉट ऑफ एक्ने, but there are a lot of people who do deal with a lot of acne, so they can go for something like clay masks or something to soothe their acne, that will really help them। आमने स्किन केयर तो पाई गलु, हाउ निजो ग्रेस टा को अपन केंदी मेंटेन करी रखो, लाइक फॉर नाउ आमने देखि परछु यू आर सिटिंग इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर, बहुत कंपोज्ड वे रे अपन निजो को प्रेजेंट करछंदी, सेही जिंसटा केंती जणे वेरी अर्ली एज जणे बिल्ड अप करि परिबा। मु कहली परा मु बचपन रू ही पैजेंट्स बहुत फॉलो करे, तो मु देखी सुष्मिता सेन को, ऐश्वर्या राय को, केमती से मैंने बसंती, केमती से मैंने कथा हुअंती, द वे दे टॉक, द टोन दे यूज, तो एटा जमती कि एगुड़ा हमको स्कूल रे सिखा हुए नहीं कि हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक एक्जैक्टली, टू केटर टू अ लॉट ऑफ पीपल, एटा माने यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक अच्छे। तो मुझे टाइम एंड एफर्ट निज उपरे पकई एत वर्ष है कि नाउ इट्स गेटिंग रिफ्लेक्टेड, आई हैव सीन माने द रिजल्ट ऑफ लाइक यू सेड
it's just all, I've seen all these beauty queens, how they talk, how they walk, how they speak, how they address any issue. तो ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ବି ଥିଲି, I was very into debating and MUNs. I love speaking and I love voicing out my opinions. ମୋତେ ଲାଗେ କି that is, I feel the best when I'm on stage. And I feel even better when I'm on stage and I'm speaking. तो ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ମାନେ କିଛି ବି ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୋ ଓପିନିଅନ୍ ଦେବା या फिर କିଛି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିବେଟ୍ କରିବା। MUN ହେଇଗଲା ମଡେଲ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିବା, ତ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକିଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜକୁ ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି ଏଇଟା ବିଷୟରେ। It's all, in you. It's your decision कि तमे केमती, how you want yourself to be presented. Don't copy anyone. Don't copy anyone's speaking style या फिर, have your own. Okay, because you are an individual, na? If I talk like someone else, people will catch on to that. Okay, the audience is very smart. Okay, but एक होता है अपना एसेंस डालो किसी भी चीज़ में। It's not, you can be inspired but create your own. तो ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ବିଲିଭ୍ କରେ, because you are an individual yourself. तो ସେଇଟା ହିଁ कि see people, sometimes we are very inspired when we see someone talk so nicely, so gracefully, so we try to incorporate that. So try incorporating that, try practicing. ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ହେଇଯିବନି, you need to practice, keep practicing, and then you'll get the knack of it. I noticed that ମୁଁ ସେଟା notice କଲି because I am raised as a like tomboy. ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା what do we say, conflicting nature ଦେଖିପାରୁଛି। Okay, actually funny ତମେ କହିଲ କି I was also quite tomboyish because ମୁଁ ଯେଉଁ societyରେ ରହୁଥିଲି, I was the only girl in that society. ମାନେ सेम एज ग्रुप्रे बाकी सबू वर बॉयज। तो मु बॉयज मान को सांगे ही बड़ होइछि, माने जो आम सोसाइटी गोटे सोसाइटी रे रहउतलु, एना पंत भी सेठी ही रहउछु। तो माने पूरा तमे कहि पारिबो कि गुड 17 years of my life I have been brought up with boys. Even मोर जेतेटा कजिन भी खाली मो निज भौणी को छाड़ी की समस्ते भाई। So I have been a lot, and I have been quite tomboyish myself. I play a lot of football, cricket. That's why I'm into sports also a lot. That's the thing with boys who are your friends, right? So ଯେତେବେଳେ they see any kind of girly character in you, ତଳକୁ ତାଙ୍କର ଫିରକି लेना ମାନେ ଯୋଉ ମଜାକ ଉଡେ ଆରମ୍ଭ। Yeah, they when when I won after that, they were like, अरे तू मिस उड़ीसा बन गई, अच्छा चल अब तो फुटबॉल खेल, अब हम बोलेंगे कि हम लोग मिस उड़ीसा के साथ फुटबॉल खेलते हैं and all of that. तो see, tomboyish is something, and I'm quite a tomboy at heart, if I must say. I love playing football, I love playing cricket, I love playing table tennis, I love playing badminton, and I love playing all these things because the boys around me, they encouraged me to play that, and that's what got me into it. I don't pursue any sport specifically, but I really love playing all kinds of sports. And if there is like right now pickleball is the new sport, really in talk. So when I go back home, I'll definitely be trying pickleball and all of that. Okay, ଆପଣଙ୍କର रोल मॉडल किए? वो रोल मॉडल in what sense? माने pageant and modeling sense रे कि overall sense? As a life, there will be a different one, of course. As a model and pageant self. See, overall I think ସମସ୍ତଙ୍କ role model ତାଙ୍କ ନିଜ parents ଥାନ୍ତି first. Our parents are our first teacher and our first role models. We
are what our parents made us, you know, because without their support, without their learnings, or without their morals, you know, we are nothing. तो आई थिंक ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଭର୍ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆଉ ଟିଚର୍ ତାଙ୍କ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାମା ବାପା। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି ମୋ ମାମା ବାପା ହିଁ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍, ମୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ମାନେ inspiration to become anything. So especially my mom, like, you know, because girls mostly look up to their moms, and I've always looked up to her. She is a fantastic lady, and we always wish, you know, young girls, you know, we always wish कि हम अपनी मम्मी जितनी सुंदर हो, हमारी मम्मी जैसे ड्रेस अप करती है हम भी वैसे ड्रेस अप करें, the way she talks, the way she is, we also try to incorporate that into us. So, you know, all that I am, it's like big chunk of it is because of my in your eyes, like how much you love your parents. it's because of my mother, and you can say the confidence and, you know, the vigor, I get that from my father, because my father, he comes from a very small village, you know, he came from a very small village, and now he's working in Mumbai, based off in Mumbai, and he's working in Mumbai since 30 years. So coming from such a small place to building such a big life and giving me and my sister such a comfortable and nice life that today we are here. So he has put a lot of efforts for me to be here. So my mom, dad are my first role models. Now if you say the pageant wise and beauty, I have one beauty queen that I've always looked up to, and I will always look up to, is Shushmita Sen. I adore her. I admire her generously. And I think because of her, you can say that I got into pageants. I feel she is inspired. Yes. It's not just her participation in Miss Universe and becoming Miss Universe. It was the aftermath also. She adopted 2 girl children, and she is still the mother of both of them. Her lifestyle and her promise to the world. So that really inspired me. I also love children a lot. I love working with children. I've worked with a few orphanages here and there, and it's something different, and children are really a gift of God. They are, and the fact that she, you know, true to her words, you know, a true Miss Universe. So because of her actions and her contribution to our, you know, country, and her contribution to humanity and all, really inspired me. And ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଦେଖିଛି କି ଜିତିଲା ପରେ any kind of pageants, ତାଙ୍କର personality takes a 180 degree turn. Okay, I'm not saying 360 because it will land in there only. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁରା completely opposite ହେଇଯାନ୍ତି. But as far as Susmita Sen, she is truly what she showed us. Yes, exactly. That's why I love her. She, like I said, true to her words, and I think that is how a role model should be. And she's my role model, and I really look up to her, and hopefully I'll be able to give the world the same, you know, the same compassion like she gave, and I'm heavily inspired by her, and I hope that in fact I can give more than she did. ଟିକେ ଇଏ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବା. ୟୁ ଆର୍ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଗର, ଆପଣ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଗର ଏବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବି ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଉ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ. ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମଡେଲିଂ କ୍ୟାରିୟର ଏଜ୍ ୱେଲ୍. ଓକେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି. ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମ ଇଏରେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଡିରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମିଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ପଚାରିଥିଲି କି ବହୁତ ଜଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଝିଅ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଝିଅ ପୁଅ ବହୁତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଡେଲିଂରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଟିକେ ହେଜିଟେଟ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମନା କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୱାଇ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍. ଠିକ୍ ଅଛି,
तो दे हेजिटेट अ लॉट, दे लाइक नाई एपटू गले बहुत डाउनफॉल्स भी अच्छी, बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स गुड़ा को बहुत मार्क आउट करते से से विषय आप कौन कहना चाहिए? तो पेरेंट्स मन को जो जहाँ कंसर्न देखो एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स मन को तो कंसर्न रहिबो ही ना तांको चाइल्ड प्रति एंड यू आर राइट कि बहुत नेगेटिव एयर अराउंड दिस इंडस्ट्री एज अ होल अच्छी बट दैट डज नॉट मीन कि माने तुम चाइल्ड को ट्राई भी करने को दबनी लेट देम ट्राई लेट देम माने फिगर आउट ऑन देयर ओन थोड़ा सा help them always support them because without your माने जदि पेरेंट्स सपोर्ट करेनि तो छुआ मनकर माने सी जो गोटे थाए ना माने कौन कहबी माने जिलटा ही खत्म हो जाए कि मो मामा बापा तो माने राजी नहीं मु कौन पेटा करी कौन लाभ मामा बापा तो खुशी होना तो डोंट किल दैट एक्साइटमेंट इन योर चाइल्ड फिगर आउट करो सब किछिटा जगह ठीक न थाए मे बी बट दैट डज नॉट मीन कि पूरा इंडस्ट्रीटा ही खराब दैट डज नॉट मीन कि पूरा इंडस्ट्रीटा ही खराब बहुत जगह सेमती अच्छी जो तुम बहुत ग्रो करि आई थिंक अ मेजर रीजन पेरेंट्स मना कर दियंती स्पेशली एज यू सेड फॉर गर्ल्स कि आम एते न्यूज़ शुणु कि ए डायरेक्टर ए प्रोड्यूसर एमती सब आम न्यूज़ शुणु से आम जहाँ न्यूज़ रे देखिबू तो वी विल हेजिटेट very human to hesitate but that does not mean we completely put a stop to it mane always encourage your children to pursue what they want but always be mane tanko pachhere thiya ho so that as a support system taki kichi jodi kichi mane you know touch wood semthi ho no but kichi jodi kharab hei bi gala ki kichi bhul bi he gala so they know ki they have their parents और parents होउछंती गोटे बहुत बड़ pillar लाइफ रो तो यू शुड माने दिस इज अ मेसेज टू ऑल पेरेंट्स कि कभी कि जदि तुम भाव जदि मो पेरेंट्स मते सपोर्ट करना थांते तो मो पेरेंट्स कौन ऐश्वर्या राय रो पेरेंट्स कि सुष्मिता सेन रो पेरेंट्स कि तमने जाओ एना मानुषी चिल्लर रो पेरेंट्स तांको जदि सपोर्ट करि न थांते तो से माने कितनी एते आगो को बढ़ंते यू नो तांको कंट्री पे एते करि पारंते तो सेटा होची गोटे मेजर कथा कि पेरेंट्स विथ पेरेंट्स सपोर्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल सबु जिनसर प्रोज एंड कॉन्स थाए नॉट जस्ट कि ये इंडस्ट्री रो प्रोज एंड कॉन्स अच्छी सबु इंडस्ट्री रो प्रोज एंड कॉन्स थाए तुम जोठी भी जीव तुमको किसी ना किसी टिके हेजिटेट लागिबो किसी ना किसी डेंजरस लागिबो बट तुमको जहाँ इच्छा अच्छी माने तुम जदि मन रे अच्छी कि तुम करि पारिबो तो तुम सेटा पे डेफिनेटली ट्राई करो और तुम्हें तुम पेरेंट्स को कन्विंस करो और पेरेंट्स मैंने भी सेते अंडरस्टैंडिंग बनो कि तुम तुम चाइल्ड को सपोर्ट करि पार सब जिनसरे तो से जदि पेरेंट और चाइल्ड रे जदि कोऑर्डिनेशनटा हबो ताले एवरीथिंग विल गो स्मूथली एंड यू नो नथिंग इज यू नो लाइक अनअचीवेबल आ गोटे क्वेश्चन थिला कि जेतबळे आपण जने मॉडल भलिया काम करछन of course you have to work for some fashion designers ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି sometimes ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ creativity କୁ explore କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ express କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି they choose very unconventional type of clothing as well okay that doesn't go with the ethics of the country we stay in okay sometimes it's I'm not pointing out all kind of clothes. I'm saying very specific ones. Jota bahut. There is a thin line between actually looking sexy and looking vulgar. Yeah, okay. True. So, say jinsota jatore if you're not comfortable with a piece of clothing, how do you like balance it out, or how do you like react to it? Okay, as a model, first of all, you are trained in a way that you need to be comfortable with most clothes. But as you said, there is always, you know, not every time you will get the clothes you prefer or the clothes you're comfortable in. So if something like that, mane jodi semti kichi hue, तो मोर माने माई एक्शन टुवर्ड्स इट इसकी जे भी डिज़ाइनर था कभी एट द एंड ऑफ द डे मॉडल्स आर टू शो द डिज़ाइनर्स कलेक्शन राइट तो आई विल गो टू द डिज़ाइनर एंड आई विल टेल because designers are very considerate
ओके बिकज आमे ही तो तांको माने पीसटा को शो करछु तो जदि आमे ही कंफर्टेबल रहिबुनी स्टेज रे तो से like if you see a model walking but you can visibly see that she's uncomfortable, so your attention goes to the model rather than the piece of clothing she's wearing. So ମୁଁ ଯାଇକି ଡିଜାଇନରକୁ କହିଦେବି କି ସର୍ କି ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁନି, ତମେ ଯାହା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବ, ଦ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ can you make them to the dress or the garment I'm wearing ताकि ମୁଁ ଟିକେ comfortable ହେଇକି ଚାଲିପାରେ. And designers are very understanding, they mostly say yes only, but if at all ମାନେ ସେମିତି କିଛି situation ଆସୁଛି କି ମାନେ designer ମାନେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି कि ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ହେଇଥାଏ, କହିବେ କି not all designers are good, no, तो ताहले माने you need to take a stand for yourself कि no, माने as model हो देखो तमे काम करछो, you have to work, that is one thing, but समस्त को boundaries हवा बहुत important, so you should have your boundaries कि no, if I'm not comfortable I will not walk the ramp. तो सेटा गोटे especially you know a working field रे it is very important to know what you want and to set boundaries accordingly. That's a beautiful answer actually. एंती टाइप रो बहुत जन को करेज आसेनी because बहुत जन स्टार्ट आउट करंती नुआ नुआ तांकर किछि स्ट्रांग बैकग्राउंड नाही एंड सेतपे से माने बहुत जगह हेजिटेट कर दियंती and show कर दियंती but then they are not happy with themselves. Okay, से regret टा रही जाय तांकर. तो that's actually what one should do. That's the point. No, कि तमे जहाँ भी करो but never do something which feels wrong to you in your heart. माने you should always माने एमती किछि करनी कि next day तमे निज को ही mirror रे देखि पारबनी, माने you cannot look at the mirror yourself. Okay, so you need to be माने you should whatever action you take you should तमे be mirror रे निज आखि रे आखि मिसेई देखि हाँ exactly correct. तो you should जहाँ भी तुम decision नबो माने तमे भले ही माने people around you are not you know satisfied with that, but you should be, ताकि जिते बेले किसी तुमको लगिला कि किसी blame भी तमे करिबो, it comes to you, you don't have to blame this person, oh this person told me this, okay this person told me that, ठीक है, you will at the end your decisions are your decisions only, people can give their inputs but at the end of the day तमे ही हाँ नाई करिबिनी सेटा होची तमो decision. ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ସ୍ପେଶିଆଲି as I said कि it is very important कि देखो ପରେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କଲେ ତ ମାନେ it is of no point, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ବି ନାହିଁ, ତମେ ଖାଲି ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯାହା କହିବ, ବଟ୍ it is very important कि you know ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା कि ମାନେ we don't regret our decisions. So one thing about that is कि setting boundaries, because you know what you want, right? So having clarity in life in general is very important. एमती कौन social norms की social issues अच्छी जोटा you wish to address in future? See, there are multiple social issues, but one that has really hit me, talking about the entire country itself, is poverty, and I have seen it from very close. Okay, see this thing about poverty, we all felt it. Okay, I mean समस्त हम locality रे देखी छु, and then somewhere along the line माने बहुत माने छोटल तो एटा भी थिला कि नहीं मु जदी मु 30 पढ़ा हे गले I'll do this, I'll do that, माने बहुत I'll donate, very superficial जिंस वाला कोई हमें भाभी दो. Okay, किंतु ए जिंस वाला बुझे बहुत जरूरी कि सबटो छोटो एफर्ट, बहुत छोटो एफर्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट. ओके, तो सबटो छोटो एफर्ट कि जनंको पाई जदी तमे भी कर दोछ, दैट इज इफेक्टफुल, दैट्स व्हाट यू से. तो मु कहया चाहूँ कि से पोवर्टी पाई आपण कोन करया चाहे एज लाइक once you start out working for it,
Yeah. तो कौन आपको So before that, I'll give you some context on how, there's so many social issues, multiple social issues, so many social issues in our country. But one that really sticks out to me, I said, is poverty. So as I said, that I have been engaged in quite a lot of orphanages. So the interaction was here in Bhubaneswar itself. I'll not take the name of the orphanage, but I was visiting an orphanage for a project for my college. So there, was talking to the children. They cannot speak in English or Hindi. So I was the only Odia person. So I was really into, and as I said, I love children. I love talking to them. They are so fun and lively. तो ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କଥା ହେଉଥିଲି ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ମାନେ 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ ବି ଥିଲେ 10 ବର୍ଷର ବି ଥିଲେ 20 ବର୍ଷର ବି ଥିଲେ ତ ସବୁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ଥିଲା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଫନେଜେସ୍ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ ଟିକେ Q&A ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ସେଇ ଅର୍ଫନେଜ୍ରେ ଅଧା ଛୁଆମାନେ ଅର୍ଫନ୍ ନୁହଁ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ପେରେଣ୍ଟସ୍ but they come from such poor backgrounds, such poverty कि तांको parents afford ही करी पारु नांती तांको raise करिबा सेमाने आसी कि तांको orphanage रे छाड़ी के पढ़ौचंती आउ this is so emotional कि once a year only they are coming to meet their child okay माने भाबो कि माने तम गोटे छुआ अच्छे आउ माने तम पाखे बिल्कुल रिसोर्सेस नहीं ताको बड़ करवाकू तो तुम ताको गोटे ऑर्फनेज रे छाड़ी दौच ताकि से खाए माने माने 3 बेलर खाना मिलिबो पाठ पढ़िबो बिकॉज ऑर्फनेजेस प्रोवाइड दैट द ऑर्फनेजेस आई विजिटेड सब खाना पीना माने पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग नाइसली डन सो आई फेल्ट सो बैड कि इतना पॉवर्टी कि आप अपने बच्चे को भी मतलब रेज नहीं कर पा रहे खुद एंड साल में बस एक ही बार उससे मिलने आ पा रहे सो दैट रियली वी कंप्लेन सो मच अबाउट लाइफ ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा बट व्हेन यू मीट एंड इंटरेक्ट विद पीपल लाइक दिस स्पेशली चिल्ड्रन दे ऑलवेज हैव सच ब्राइट स्माइल्स ऑन देयर फेस तो when you interact with them you realize कि हमारी problems कितनी छोटी हैं so small look at them they have such big problems yet they're smiling like nothing has happened yet they're so lively playing so that's when it hit me कि poverty is such a big issue and poverty is from where does it root to it roots to education that's why education is very important educating everyone is very important necessarily but like a lot of places they don't believe in educating girl child and stuff so I think that trend should be cut down abhi to bahut in fact in the recent years kitni sari yojana aa gayi hai beti padhao beti bachao तो but poverty मैं क्या बोलूँ कि stems from the lack of education so if you're not educated so that will obviously lead to poverty and I feel ये जो गांव वगैरह है इसमें more education should be accessible to all so this social issue poverty is connected to education कि because education proper education not just basic proper education is not accessible to all then it will lead to poverty but if everyone around you village kids adults everyone is educated to a certain level that they can do a job any basic job okay then you can come out from that work towards it stuff like that ଟିକେ interrupt କରିବି कि okay education matter କରୁଛି ବହୁତ but employment opportunities are getting deteriorated day by day okay true ବହୁତ ଜଣ ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଜଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଭର୍ଟି ତ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରନ୍ତିନି ଅଫକୋର୍ସ ବଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୋ
all in all it needs a 360 degree মানে solution দরকার তার গোটে it's like considering or like focusing on education alone won't solve it. Yeah, true. Okay, the government needs to take like କିଛି ଜିନିଷ add କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଯୋଉଟା actually And the government is working on a lot of schemes because the employment rate is quite high, as you said. It's quite an issue. After even a basic degree, it's getting very hard for people to get a job, especially in this economy, and it's just getting worse and worse and worse. So that's definitely an issue, and I think I don't know like what I should say exactly on it, because I think I'm pretty young to comment on the employment rate and how it should be fixed. But one thing that I'll definitely say is ki the world is not it does not have less opportunities. The doors are there for everyone. You just need to sometimes opportunity does not knock. You need to go and grab that opportunity. So I feel one reason that people are always looking towards one field or running towards one job, so I think if people they explore different fields, okay, that way they can understand ki they are not just fit for one job, they can fit different roles if they try for it. So that can maybe help with them understanding how will they employ themselves. Because when we are studying, like let's say say कि someone is studying computer science for example, so it does not mean कि जो 3000 बच्चे computer science पढ़ रहे हैं वो सब लोग graduate करने के बाद IT में ही जाएंगे, ठीक है. They can go to marketing, they can go to sales, they can go to consulting, they can go to being something else also, completely different also. So वो रहना चाहिए कि you should be open to opportunities. If you're rigid कि नहीं मुझे यही बनना है, मैं यही बनूंगी या बनूंगा, okay, then you're limiting yourself. So you should be open to all opportunities, and I think that will definitely solve quite a bit of that. Okay, आमने बहुत serious talk करने पड़ी. Okay, आउ बहुत long भी drag ही गलानी. आउ last दी तीनटा question परे we will conclude this episode. So let's go back to your time with Miss Odisha India 2025. So पूरा competition was around 20 days time span रही थला. So did you make any new friends? Oh, I made a lot of friends. Everyone there was so beautiful, obviously, and very nice and very bubbly people. And we all, you would think a lot of people, in fact, asked me कि बहुत rivalry होगा, बहुत competition होगा. But, it's quite the opposite. There was a lot of sisterhood. There was a lot of friendships. There was a lot of sisterhood. Like we all were, मतलब जितने भी सब contest थे, जितने भी सब किसी भी सब contest थिला, सबो गुड़ारे आमे मने एक दूसरे को help करचु जदि कारो किसी pin fix है, आमे मने जेकी pin लगे दोचु, कारो makeup है नहीं तो आमे जेकी touch up कर दोचु. So we are all helping each other, and pageants are really, a lot of people who don't follow pageants that much think it's competition and rivalry, but it's actually जो मैंने closely follow क्वेश्चन से मैं जाने पे कि it's a lot of friendships, a lot of women supporting women, and a lot of sisterhood. तो मैंने तो समझते even after the competition समझते मैंने इना भी कथा हो, इना भी we are commenting on each other's post, meeting also. I've met a few friends of mine also. So I've made a lot of friends. I got to know a lot of new people. And as I said कि हम लोग top 12 थे, तो top 12 like after the mega auditions, the top 12 had to spend 20 days doing the sub contests. So that top 12 batch, we all gelled really well together. We had so much fun. We made so many memories. हमको बहुत मजा लगिला. माने से पूरा जर्नी टा ही
खाली मोर जर्नी नहीं कि माने जे फर्स्ट रनर अप आसिला तार जर्नी नहीं कि जे सेकेंड रनर अप आसिला तार जर्नी नहीं आम समस्त जर्नी सेटा समस्त डिफरेंट स्टोरीज बट द जर्नी इज वन like we all say 20 days were dynamic. से 12 जन भितरु एंडी किए थिला कि जहाँ को अपन लाइक फर्स्ट टाइम हेल्प देखिले एंड इट्स लाइक दिस गर्ल इज लाइक दिस गर्ल हैज वेरी गुड पोटेंशियल मैंने से मतलब टॉक कर दबा से टाइप एक्चुअली सेमती मु भाबेनी मोस्टली माने you should not view I don't view anyone as competition as such but कभी जितने आम एमती भावु ना कि ये मो competition सी मो competition आम जो focus टा सेटा सेमान को ऊपरे पड़ा है but in this journey it is very important कभी at the end of the day जितने judges अपन को judge कर चंदी से देखी भी नहीं कि ये ताठो better कि ये ताठो better how better you are तो you should be focusing on yourself and fixing your flaws and तमर जहाँ तमें माने जब तमें nitpick करिबो तम fellow contestants को कि यारो एटा भलो नाई यारो सेटा भलो नाई तो you are not focusing on yourself समस्त top 12 रे अछंती समस्त माने किछि ना किछि टैलेंट अछि तो I focus on working on myself. The next part of the question, if I say someone I really when she walked in I was very I would say I was enchanted because she's so beautiful, is the second runner up Navya. So she walked in and she is already very established and she's a very good actress and she is a very fun person also. So she is older to me, so she taught me also a few things. She gave me some tips and tricks also, and it was very fun interacting with her. And someone I looked up to in the competition, you can say ki it was Navya. Okay, and I hope I was also able to provide something to her through our conversations. Yeah. फाइनल मोमेंट थिला माने यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेकिंग इट देयर माने सी टाइम रे जितळे फाइनल मोमेंट थिला समस्तंकर लाइक दिल थाम लेना वाला मोमेंट जोटा ओके तो माने एंती थिबो कि कोट किए जितिबो एनीवन कैन विन इट ओके तो व्हेन यू हर्ड योर नेम लाइक जितळे अनाउंसमेंट हैला कि ना नेम परे ही तो आगो नंबर टा ही तो ओके जेताळे यही तो आगो कोन फील हैला ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम नंबरिंग थिला 0 1 0 2 0 3 सेमती करके 12 तक ठीक अछि तो फर्स्ट माने तोड़ स्टार्ट हैला सो आफ्टर आई गेव माय Q&A जैसे माने हम समझते निजको कितने सेल्फ एक्चुअली बहुत सेल्फ क्रिटिसिज्म भी सब इंडिविजुअल मन को समस्त कथा है सेटा कि हमें ना एटा टिके बेटर ही पारि थांता एटा मु टिके भूल कहि देली एटा आउ टिके बेटर मु कहि पारि थांती ठीक है तो बैक स्टेज जेतबेले मु थिली मु भाबिली माने आफ्टर माय Q&A राउंड कि मु आउ किछि भलो कहि पारि थांती एटा माने मु सैटिस्फाइड नुह माने भल कि आंसर देछि मु जानछि बट गोटे थाए ना कि सी आई एम अ वेरी कांस्टेंट क्लाइंबर इफ आई एम डूइंग समथिंग गुड आई एम थिंकिंग हाउ कैन आई मेक इट बेटर तो माने मु फल कि एटा जदि मु ऐड कर देतांती आहुरी टिके बेटर ही जाइतांता बट आई कैन नॉट गो बैक तो मु कहले कि अच्छा सी मु को भी कंपटीशन रे जाए मोरो माइंडसेट होछि कि मु हारना एंड जीतना आर टू डिफरेंट थिंग्स बट what matters to me the most is कि मु जीते या हारे people should remember me, people should remember how good I performed, so I focus on giving my best performance. ठीक है, maybe my best ends up being the best performance of the night, maybe someone else tops me, maybe someone does not, but I should be satisfied with my performance and I should work on giving my best. तो सेटा मोर सब बेले ही थाए किछि को भी कंपटीशन हो डिबेट हो एमती तम MUN हो कि तम पेजेंट भी हे जाओ तो सेटा मो सब बेले गोटे माने गोटे थाए माइंडसेट गोटे थॉट प्रोसेस
तो आफ्टर क्वेश्चन आंसर राउंड ହେଇଗଲା we had a small break ଆଉ ତାପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସେ ବ୍ରେକ୍ରେ ଅବଭିୟସଲି ତମେ ଟିକେ ତ ନିଜକୁ ଟିକେ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ otherwise humanly quality actually very human. once you are like ମାନେ any kind of situation ଆପଣ ଅଛନ୍ତି any kind of debate ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି any kind of competition ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି any kind of ଝଗଡ଼ାରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ on spot କିଛି କହିଦେଇଥିବେ and then ଇଏ କଲା ପରେ ପଛକୁ ଆସିଲା ପରେ you will be like I could have said this, no? I could have said something better, or I couldn't have said this. You know, you do say, and that is very important. So you know your mistakes, and next time when you are in the same, mane, tame author say same situation ko asibo, so you can perform better. So say a backstage re bhabudili ki actually when the question answer round started, I was the first one to be asked the question. So mane mu first hi aitli. So the first question of the night was to me only. तो my question was कि what is your dream, what has been your childhood dream, and you know what are you doing towards it. So that was my question, and it was a very very interesting question. You know, everybody can have multiple answers to it. I answered that my childhood dream has you know been being to be crowned as Miss India and hopefully go to Miss World and represent my country, and that's something I've hold on to, and that's something I'm still holding on to, and I just wish to give my very best and perform my very best so that I can achieve this and you know voice for a cause. Very short, simple, sweet answer, but you always do self analysis कि और जदि मु ए पॉइंट ऐड करथांती तो एटी के बैक स्टेज रे तापर जेतबे से मैंने अनाउंस कले कि मैंने समस्त स्टेज को आसो इन सब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल तो आई जस्ट टोल्ड माने निजको खाली गोटे कथा कहली कि जहाँ हेगला इन सब जगह ऊपर जय जगन्नाथ सब जहाँ हम सब माने ठाकुर को हाथ धरे ठीक है ठाकुर जहाँ दे कौन मैंने मैंने बिलीव कि मैंने जो होता है अच्छे के लिए होता है तो मुझे कहली यदि मोर ए थर न भी है आई कैन कम अगेन एंड आई कैन बी परफॉर्म बेटर तो दैट्स व्हाट आई थॉट एंड आई केम तो हम समझते ठिया हो फर्स्ट सेकेंड रनर अप अनाउंस है तो मैंने एक्चुअली से जो तुम से स्टेज से मोमेंट रे थाओ यू कैन नॉट फैदम एनीथिंग मैंने तुम किसी भाभी पारनी मैंने मुंड ही चलेनी एंड सो मच क्राउड वाज देयर सो मेनी पीपल सराउंडेड अस जजेस आर सिटिंग इन द फ्रंट खाली मैंने छातीटा खाड़ी धक 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 होचे तो आम समस्ते एमती बस मैंने ठिया हेतिलो फर्स्ट सेकेंड रनर अप गला तो तापर टिके मैंने गोटे अच्छा ओ गोटे मैंने ठीक अच्छे माने गोटे जिनस पलैला माने गोटे प्राइज पलैला सेमती समस्त सेमती भावती ना तापर फर्स्ट रनर अप अनाउंस है कहली आ गोटे पोजिशन पलैला तापर विनर देख एट द एंड विनर तो देयर इज ओनली वन विनर एंड स्टिल सो मेनी ऑफ अस वर स्टैंडिंग तो मु खाली किसी ना मु बहुत न बिकॉज ऑन द स्टेज यू कैनॉट माने यू कैनॉट एक्सप्रेस व्हाट यू फील यू कैनॉट मेक अ माने भले अंदर से बहुत नर्वस लगुची माने पूरा छाती धक धक करची बट वी हैव टू कीप आवर स्माइल ऑन यू नो लुक एज ग्रेसफुल एज वी कैन दैट्स व्हाट यू नो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू कैरी how you composed you are and how you carry yourself in you know such that is the thing. So I'm something here, and then the anchor, very good anchor, very nice guy. He announces, so he goes like, and the winner is, and then he asks the audience, what do you guys think it is? And you know, creating like a suspense create करथिले ठीक है हम पूरा डरी की पूरा मो माने pageant pose रे ठिया हिची तापर से कहै and the winner is 0 and my number was 03 so he goes like and the winner is 0 and then he takes a long pause and I'm like there are so many people with 0 मैंने पूरा 9 तक 09 तक there are like 9 people 0 and then he goes like 3 and I'm like oh my god that this is my exact reaction I just you know a breath of relief like I was like
oh my god, I won. And I couldn't, you cannot fathom it at that time. So I was very happy. मैंने बहुत खुशी थी मु बट मु किसी मैंने मु सब चीज प्रोसेस करी पार नथली कि मैंने मोर एते हार्ड वर्क पे ऑफ कला मैं वी ऑल सी not just me, all 12 girls there worked very, very, very hard. No one's hard work was more than someone else's. Okay? A lot of luck is also involved. There are many factors, but I know all 12 of us worked like हम लोग शूट करते थे दिन रात पूरा almost. ठीक है? तो we all worked so hard and it was just so good being with so many different, in pageant there are so many different girls, all types of girls, and you learn from all of them, so many different personalities, and I'm so glad that I learned from each and every one of them. Like I took something with me, so that's, I think the real prize is that sisterhood and that learnings that I take from this journey. So yeah, it was very beautiful, and that night was definitely a night to remember. Okay, second last question of the hour. जदि आपण निज पास्ट को जाई परिबे और निज फ्यूचर को जाई परिबे, what is the piece of advice you will give both of them? Okay, so first let's start with the past. Okay, if I go to my past self, I will tell her that she shouldn't be afraid of change, because I feel I'm someone who is from my past, I was very afraid of change. I really liked my comfort zone, and that made me stagnant for that time. But the moment I took the decision ki nahi, things can't work out like this, I need to get out of my comfort zone, I need to be out there. It's very important ki you should put yourself out there. माने तमे निजको पूरा माने expose करिबा बहुत important, so that you can learn. So that is very important. So that will be one advice to my past self. To my future self, I would give an advice is to enjoy every moment. We get so lost in so many thoughts, so much overthinking, that we forget that at the end of the day, life is about enjoying and being with our closed ones and just feeling alive in those little moments. So enjoy every moment. Don't be don't let because in things like this, don't let greed or pride take, because greed and pride can take a lot from you, and you might not know that. But don't let greed and pride take your happiness. Be in peace, be happy, try your best to live your best life. तो सेटा गोटे एडवाइस रहिबो मो फ्यूचर सेल्फ को आम ऑडियंस मन को भी कि एंजॉय ऑल योर लिटिल मोमेंट्स, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. दैट विल बी माय एडवाइस. एटा हला लास्ट क्वेश्चन कि आमर दर्शक माने जति भी जने देखुचंती तांको पई व्हाट इज द पीस ऑफ एडवाइस आपण देबाको चाहिए? ओके, तो गोटे पीस ऑफ एडवाइस जोटा मो ऑडियंस मन को देबाको चाहिए इज कि आमे सब बेले किछि माने अचीव करिबा पे आमे वेट करू कि हमको किछि सिग्नल मिलिबो. आमे वेट करू कि एटा ही जाऊ तो मु एठी पळेबी, फिर एटा गोटे थर मोर ए कामटा ही जाऊ मु एटा कर देबी. माने आम जो गोल थाए लाइफ रे आमे ताको माने आमे एमती वेटिंग रे रही जाऊ कि गोटे थर बस एटा ही जाऊ तो मु माने एटा रे एनरोल कर देबी. ठीक अछि, बट माने मोर एडवाइस होची कि सब बेले से सिग्नलटा मिलेनी आउ सब बेले केही गाइड समस्त को थांतीनी कि से तांको कहबे कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, कि माने एटा राइट टाइम नु है. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग for anything you want to achieve or anything you want to do is to start. It is very important to start. गोटे थर जब तुम स्टार्ट कर देबो you will learn along the process, but आमे
स्टार्ट ही करिबुनी तो इट्स नील माने इट हैज इफ यू डोंट स्टार्ट समथिंग हाउ विल यू रीच टू द एंड ऑफ इट तो आमे वेट करू कि गोटे सिग्नल मिलिबो कि अच्छा हाँ मु एटा ही साला परे एटा स्टार्ट करिबी बट जदि तुम माने यू नो इट इज योर पैशन यू टू फॉलो समथिंग और डू एनीथिंग इन लाइफ जस्ट स्टार्ट एंड you learn along the process and then you'll achieve it so सेटा होची मोर गोटे एडवाइस सब ऑडियंस मान को पे सब छोट छुआ मान को पे इट अप्लाइज टू ऑल कि तुम जहाँ भी करिवो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट इट एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग because the process is hard to achieve anything great in life but it's even hard to start that process once you start you will get the momentum तो এটা बहुत माने जरूरी कि आमे स्टार्ट करो that is my advice It was beautiful talking to you. likewise And to be honest, बहुत maturely आपण सब क्वेश्चन आंसर देइछंदी. And माने मु टिके ये कहबी एटा कि sometimes people think that आमने बहुत बड़ा ही सलुनु कि छोटो पिला माने हमु कोन कहबे but there are many times you can learn a lot of things from people like her also कि माने आई के मु नीचे देखी जी ता sense of maturity the way she answered every question okay जो question गुड़ा से answer करले जो way रे से कहिले आउ each and everything से address भी करले बहुत beautifully से कहिले and it was very nice talking to you and Same. hopefully आपण कर Miss India contest टा बहुत भलो जाऊ thank you so okay and thank you for coming to Odisha Talks thank you for having me here us were standing तो मु खाली किछि ना मु बहुत नॉर्मल बिकॉज ऑन द स्टेज यू कैनॉट माने यू कैनॉट एक्सप्रेस व्हाट यू फील यू कैनॉट मेक अ माने भले अंदर से बहुत नर्वस लागुची माने पूरा छाती धक धक करची बट वी हैव टू कीप आवर स्माइल ऑन यू नो लुक एज ग्रेसफुल एज वी कैन दैट्स व्हाट यू नो इट्स ऑल अबाउट कि how you carry how you composed you are and how you carry yourself in you know that is the thing. So I'm Samsat Yaishu and then the anchor, very good anchor, very nice guy. He announces, so he goes like, and the winner is, and then he asks the audience, what do you guys think it is? And you know, creating man tike suspense create korthile. ठीक अछि हम पूरा डरी की पूरा मो माने pageant pose रे ठिया आइछि तापर से कहछि and the winner is 0 and my number was 03 so he goes like and the winner is 0 and then he takes a long pause and I'm like there are so many people with 0 मैंने पूरा 9 तक 09 तक there are like 9 people 0 and then he goes like 3 and I'm like oh my god that this is my exact reaction I just you know a breath of relief like I was like oh my god I won and I couldn't you know you cannot fathom it at that time so I was very happy मैंने बहुत खुशी थी मु बट मु किसी मैंने मु सब चीज प्रोसेस करि पार नथली कि माने मोर एते हार्ड वर्क पे ऑफ कला आउ वी ऑल सी not just me all 12 girls there worked very 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 hard no one's hard work was more than someone else's ठीक है a lot of luck is also involved there are many factors but I know all 12 of us worked like हम लोग शूट करते थे दिन रात पूरा almost ठीक है तो we all worked so hard and you know it was just so good being with so many different you know in pageant there are so many different girls all types of girls and you learn from all of them so many different personalities and I'm so glad that I learned from each and every one of them like I took something with me you know so that's I think the real prize is that sisterhood and that learnings that I take from this journey so yeah it was very beautiful and that night was definitely a night to remember okay second last question of the hour जदि आपण निज पास्ट को जाई परिबे और निज फ्यूचर को जाई परिबे what is the piece of advice you will give both of them okay
So, first let's start with the past. Okay. If I go to my past self, I will tell her that she shouldn't be afraid of change, because I feel I'm someone who is from my past, I was very afraid of change. I really liked my comfort zone, and that made me stagnant for that time. But the moment I took the decision ki nahi, things can't work out like this, I need to get out of my comfort zone, I need to be out there. It's very important कि you should put yourself out there. माने तमे निजको पूरा माने expose करिबा बहुत important, so that you can learn. So that is very important. So that will be one advice to my past self. To my future self, I would give an advice is to enjoy every moment. We get so lost in so many thoughts, so much overthinking, that we forget that at the end of the day, life is about enjoying and being with our closed ones and just feeling alive in those little moments. So enjoy every moment. Don't be don't because in things like this, don't let greed or pride take, because greed and pride can take a lot from you, and you might not know that. But don't let greed and pride take your happiness. Be in peace, be happy, try your best to live your best life. तो ସେଇଟା ଗୋଟେ advice ରହିବ ମୋ future self को ଆଉ ଆମ audience ମାନଙ୍କୁ ବି कि enjoy all your little moments, live life to the fullest. That will be my advice. ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତିକି ବି ଜଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭାଇସ୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଜ୍ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ମାନେ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁ କି ଆମକୁ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳିବ, ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁ କି ଏଇଟା ହେଇଯାଉ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ପଳେଇବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ମୋର ଏଇ କାମଟା ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି। ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ଥାଏ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ୱେଟିଂରେ ରହିଯାଉ कि गोटे थर बस एटा हो जाओ तो मु माने एटारे एनरोल करदेवी, ठीक अच्छे। बट माने मोर एडवाइस हूँ कि सब बेले से सिग्नलटा मिलेनी, आउ सब बेले कहीं गाइड समस्त को थांतीनी कि से तांको कहबे कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, कि माने एटा राइट टाइम नुहे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग for anything you want to achieve or anything you want to do is to start. It is very important to start. गोटे थर जब तुम स्टार्ट कर देबो you will learn along the process, but आमे स्टार्ट ही करिबुनी तो it's nil. माने it has, if you don't start something how will you reach to the end of it? तो आमे वेट करो कि गोटे सिग्नल मिलिबो कि अच्छा हाँ मु एटा ही सारा पर एटा स्टार्ट करेबी। बट जदि तुम माने इट इज़ योर पैशन, यू टू फॉलो समथिंग और डू एनीथिंग इन लाइफ, जस्ट स्टार्ट एंड यू लर्न अलोंग द प्रोसेस एंड देन यू विल अचीव इट। सो सेटा होची मोर गोटे एडवाइस सब ऑडियंस मानक पे, सब छोट छुआ मानक पे, इट अप्लाइज टू ऑल कि तुम जहाँ भी करिवो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट इट, एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, because the process is hard to achieve anything great in life, but it's even hard to start that process. Once you start you will get the momentum. तो इटा बहुत माने जरूरी कि हमें start करो. That is my advice. It was beautiful talking to you. Likewise. And to be honest बहुत maturely आपण सब क्वेश्चन आंसर देइछंदी। एंड माने मु टिके ये कहबी एटा कि समटाइम्स पीपल थिंक दैट आम मैंने बहुत बड़ा ही सारूँ कि छोट पिला मैंने आमको कौन कहबे, बट देयर आर मेनी टाइम्स यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम पीपल लाइक हर ऑल्सो कि माने आई के मु नीचे देखी सेंस ऑफ मैच्योरिटी
द वे शी आंसर्ड एवरी क्वेश्चन ओके जो क्वेश्चन गुड़ा से आंसर कले जो वे रे से कहले आउ ईच एंड एवरीथिंग से एड्रेस भी कले बहुत ब्यूटिफुली से कहले एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड Same. होपफुली आपण मिस इंडिया कॉन्टेस्ट बहुत भल जाऊ Thank you so much. okay and thank you for coming to Odisha Talks. Thank you for having me here.